गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज हम करेंगे सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं उसमें पहली कैटेगरी हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो लेट अस प्रैक्टिस सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एट critical micellar concentration, the surface molecules decompose, become completely soluble, associate or dissociate. तो आंसर इज associate. ये molecules associate कर जाएंगे और micelle बनाएंगे. Colloidal solution is a heterogeneous solution. Which of the following is a lyophilic colloid? तो gum is a lyophilic colloid. Which of the following has maximum value of flocculating power? तो हार्डी-शोल्स लॉ के अकॉर्डिंगली जिस आयन की वैलेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसकी कोआगुलेटिंग पावर या फ्लॉकुलेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑफ सभी केटाइंस हैं, इनमें से लेड की वैलेंसी सबसे ज़्यादा है 4 पॉजिटिव, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल? सो फेरिक hydroxide is a positively charged soul. Zigzag motion of colloidal particles were first observed by Robert Brown. इस मोशन को ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। The colloidal system in which the dispersed phase and dispersion medium are both liquids is known as emulsion. Milk is an emulsion. In coagulation of a colloidal solution of arsenic sulfide which has maximum coagulating power, तो क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज्ड होता है तो हमें पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस देखने हैं। तो सोडियम, पोटेशियम, बेरियम और एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा वैलेंसी एल्यूमिनियम की होती है, तो आंसर होना चाहिए एल्यूमिनियम क्लोराइड का कोagulating पावर सबसे ज़्यादा होगा। Blood may be purified by dialysis. Tyndall effect is observed in a colloidal solution. Fog is a colloidal solution of liquid in a gas. Chromatography is based on the principle of physical adsorption. In colloidal state, particle size range from 10 to 1000 angstrom. Arsenic sulfide solution is a negative colloid. Shape selective catalysis is a reaction catalyzed by zeolites. Out of these, which colloidal solution is not a lyophilic colloid? Gold sol is not a lyophilic colloid. Movement of dispersion medium under the influence of electric field is known as electroosmosis. At CMC, the surface molecules associate at critical micellar concentration. Surface molecules associate. sp2s3 is example of negative sol. Which of the following is a positively charged sol? Ferric hydroxide is a positively charged sol. Then next is, after multiple choice questions, some important definitions that may be asked. Adsorption. So accumulation of molecular species more at the surface than at the bulk is called adsorption, and accumulation or distribution of molecular species same throughout within the bulk and outside, when it's same then it's absorption. And a phenomena, absorption is the term used when both adsorption and absorption occur simultaneously. Lyophilic sols are liquid loving sols in which colloidal particles have an affinity towards the solvent, then it's lyophilic sol. And lyophobic sols, when the colloidal particles do not have affinity, they are liquid hating
source. Multimolecular collides, the particles which have size less than 1 nanometer and aggregate to form colloidal dimensions are called multimolecular collides. Macromolecular collides in which a single particle is of large size and hence of colloidal dimension are called macromolecular collides. Micelles, aggregated particles of associated colloids at high concentration, are called micelles. So different colloids, when their concentration increases a certain minimum concentration called critical micelle concentration, they get aggregated to form aggregated particle of colloidal dimension. The particle is called micelle. Emulsions. So a colloidal solution of liquid in liquid is called emulsion. For example, milk. Electrophoresis. Colloidal particles move towards oppositely charged electrodes and get discharged, resulting in coagulation. The phenomena is called electrophoresis. Coagulation. So settling down of particles of a colloidal particles is called coagulation. Dialysis. The electrolytes present in the soul are removed and the process is called dialysis. Tyndall effect. Scattering of light by colloidal particles takes place and path of light becomes visible in the form of a bluish cone. The effect is called Tyndall effect. Aerosol, alcohol. Colloidal particles, when dispersed in alcohols, form alcohols. Aerosols, so colloidal solution of a liquid in a gas is called aerosol, and colloidal solution of a solid in water is called hydrosol. Brownian movement, the zigzag motion of the colloidal particles is called Brownian movement. Peptidization, conversion of precipitates into colloidal solution by adding a suitable electrolyte is called peptidization. The precipitates, because they acquire some charge, the particles get repelled from each other and form a colloidal solution. Critical micelle concentration is the minimum concentration of surfactants above which the micelles are formed. This concentration is called critical micelle concentration. So these are important definitions. एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है. The next category हम करेंगे important questions की, वो है 2 marks वाले questions जिनमें से differences important हैं. For example, differences between adsorption and absorption. तो डिफरेंस बिटवीन एडसॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन में एडसॉर्प्शन सरफेस फिनोमेना होता है जबकि एब्जॉर्प्शन बल्क फिनोमेना होता है. इसमें कंसंट्रेशन ऑन द सरफेस is different from that in the bulk, whereas the concentration is same throughout. Then difference between physisorption and chemisorption. Physisorption has low enthalpy of adsorption, about 20 to 40 kilojoule per mole. Chemisorption has high enthalpy value of adsorption, 80 to 240 kilojoule per mole. Physisorption decreases with increase in temperature. The process is exothermic process. तो टेम्परेचर के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, इससे वो डिसॉल्व हो जाते हैं, इसलिए फिजिसॉर्प्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन temperature, जबकि chemisorption first increases and then decreases with increase in temperature. Physisorption is not selective in nature. कोई भी चीज़ दूसरे पे adsorb हो जाएगी, so it does not depend on the nature or chemical properties of gas and adsorbent. Chemical adsorption is highly selective in nature and depends upon the nature of gas and adsorbent. Physisorption, the extent of adsorption depends upon the ease of liquefaction of the gas. जो गैस ज़्यादा easily liquefy हो जाती है वो ज़्यादा adsorb होती है, जबकि यहाँ पे adsorbed molecule की state जो है वो गैस की प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करती है और बल्क से डिफरेंट हो सकती है. फिजिसॉर्प्शन में मल्टीमोलिकुलर लेयर्स बनती हैं, एक मॉलिक्यूल के ऊपर दूसरा एडजॉर्ब होकर मल्टीमोलिकुलर लेयर बना लेता है, जबकि chemisorption में monomolecular layer बनती है. Next differences between lyophilic colloids and
लायोफोबिक क्लोराइड्स। तो लायोफिलिक क्लोराइड्स जो है आसानी से बन जाती है, आपको बस सॉल्वेंट के साथ शेक करना है या डिस्पर्शन फेज के साथ वार्म करना है, और इसमें किसी स्टेबलाइजर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जबकि लायोफोबिक कोलाइड्स में हमें स्पेशल मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं और स्टेबलाइजर भी ऐड करना पड़ता है। Particles are solvent loving, particles are solvent hating. They are in the form of single molecules, they are in the form of large number of dissociated molecules. Lyophilic colloids are stable, they have lyophobic have poor stability. Lyophilic colloids coagulation is reversible and occurs only by addition of large amount of electrolyte. In case of lyophobic colloids, coagulation is irreversible and occurs even with a very small amount of electrolyte. Difference between multimolecular and macromolecular colloids. When a large number of small molecules or atoms of diameter less than 1 nanometer of a substance combine together in dispersion medium to form aggregates having size of the colloidal range, the solutions are called multimolecular colloids. जबकि सब्सटेंसेस जिनका मॉलिक्यूलर मास हाई है और वो सूटेबल डिस्पर्शन मीडियम में डिस्पर्स्ड है तो कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेंगी, और इस तरह की कोलाइडल सॉल्यूशन को मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स कहेंगे। इनकी एग्जांपल्स हैं गोल्ड सोल, सल्फर सोल। इनकी एग्जांपल्स हैं सेलुलोस और स्टार्च। देन पॉजिटिवली चार्ज सोल्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। नेगेटिवली चार्ज सोल्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड्स, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड्स जैसे आयन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, एंड बेसिक डाइज जैसे प्रेशियम हेमोग्लोबिन। दीज आर पॉजिटिवली चार्ज सोल्स. Negatively charged sols, metallic particles like copper, silver, gold. Then all sulfides like arsenic sulfide, cadmium sulfide, and acidic dyes like eosin, Congo red. ये सब negatively charged sols होते हैं, और sols of gelatin, gum, starch भी. Then next question is what is adsorption isotherm? Describe Freundlich adsorption isotherm. So plot between amount of gas adsorbed x by m with the pressure is at constant temperature and is called isotherm. तो फ्रेंडलिच के एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में हम देखते हैं कि इनिशियली x by m is directly proportional to pressure. It is equal to kp raised to power 1, or at high pressures it is not dependent on pressure, p raised to power 0. x by m is equal to k into p raised to power 0. लेकिन intermediate pressure values पे x by m is equal to kp raised to power 1 by n. This adsorption isotherm is called Freundlich adsorption isotherm. Then what are emulsions? So colloidal solutions of liquid in liquid are called emulsions. For example, milk, and their different types are when oil is in less quantity, dispersed phase, and water, dispersion medium, oil in water, and water in oil when water is in less quantity and oil is in more. Example of oil in water type emulsion is milk and body lotion, and water in oil type is butter and cold cream. State Hardy-Schulz law. So in case of electrolytes, the ion carrying charge opposite to that of colloidal particle is effective in causing कोएगुलेशन. अगर पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स है तो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोलाइट के आयंस जो हैं इसको कोएगुलेट करेंगे. और हार्डी-शुल्ज लॉ ये कहता है कि जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी, ग्रेटर द वैलेंसी, मोर विल बी द कोएगुलेटिंग पावर. तो राइट अ नोट ऑन क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप. तो सोप मॉलिक्यूल्स जो हैं एक CMC कंसनट्रेशन से ज़्यादा पर एक एसोसिएटेड पार्टिकल बनाते हैं जिसको मिसेल बोलते हैं. इसमें हाइड्रोफोबिक एंड जो है वो ऑयल लविंग होता है, जबकि हाइड्रोफिलिक एंड वाटर लविंग होता है. तो ये जो हाइड्रोफोबिक एंड है ये फाइबर के ऊपर डर्ट या ग्रीस के साथ चिपक जाता है, और जब हम इसको रब करके वाटर से वॉश करते हैं तो वाटर के साथ ये पूरा मिसेल निकल जाता है और इस तरह से क्लॉथ क्लीन हो जाता है. देन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस टेबल से पूछा जाता है ये कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस में हमारे पास ये 8 टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस है. सॉलिड, सोल,
solid in solid. So sol is solid in liquid, aerosol is solid in gas, gel is liquid in solid, emulsion is liquid in liquid, aerosol is liquid in gas, and solid sol is gas in liquid, and foam is gas in liquid. तो कोई भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है रिगार्डिंग डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, या फिर एग्जाम्पल, और बोलेंगे एग्जाम्पल देंगे और पूछेंगे किस तरह का सोल है, या फिर सोल की एग्जाम्पल पूछेंगे. तो फॉर एग्जाम्पल सॉलिड सोल की एग्जाम्पल जेम्स और कलर्ड ग्लासेस हैं, सोल की पेंट्स और सेल फ्लूइड्स, एरोसोल की स्मोक एंड डस्ट, जेल की चीज एंड जेलीज, एमल्शन की मिल्क एंड हेयर क्रीम, एरोसोल की फॉग, मिस्ट एंड क्लाउड्स, सॉलिड सोल की pumice stone, then we have rubber, foam, and gas in liquid form type is froth and whipped cream and soap lather. So these are the important questions of surface chemistry. And that's all in today's video. If you liked the video, please do share and subscribe. Thank you. Have a nice day.